Good morning, everyone. We are about to deal the chapter that is time series. But before that, let us try to understand the meaning of stats. Okay, so carefully. So when I say statistics, correct. Very first thing what you should know is that it is called as the science of averages. Stats. When I talk about, it is called as the science of averages. So when I say averages, so you know very well that if I'm dealing with average, it's a single value that represents the entire set of observations, right? So how the data will be considered if I'm dealing with average? Because see, there is a problem in finding average. If there is say one wrong observation, then the average will change. जैसे कि अगर मीन मैं कहूँ आपको 5 नंबर्स का एंड दोज आर से 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 का मीन क्या होगा? 3, ठीक है। लेकिन यही अगर किसी ने 5 की जगह पर 50 लिख दिया, तो मेरा एवरेज जो है वो बहुत ड्रास्टिकली बदल जाता है, इट चेंजेस। रीज़न ये है कि एवरेज जब मैं बात करता हूँ, सो इट डिपेंड्स ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, डिपेंड्स ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। स्टैटिस्टिक डिपेंड्स ऑन ऑल ऑब्जर्व, मतलब एवरेज डिपेंड्स ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर कैसे? सी दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। इफ आई हैव द वैल्यू एज 1 2 3 4 एंड 5, मैं अगर आपको इसका एवरेज बोलूँ तो आप इजीली मेरे को बोलोगे सर एवरेज इज नथिंग बट 3। क्यों? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर गलती से by any mistake somebody misinterpreted 5 as say 50, मैंने सिर्फ 5 की जगह पर किसी ने क्या इंटरप्रेट कर लिया? इट इज 50। सो योर एवरेज इज श्योरली गोइंग टू गेट इफेक्टेड। एक्स बार जो है वो सीधा क्या हो जाएगा? 12। तो आप देख सकते हैं कि एक ऑब्जर्वेशन में चेंज आने पर आपके एवरेज में चेंज आता है। तो जब हम बात करते हैं दैट इट इज साइंस ऑफ एवरेज, करेक्ट, इट्स अ सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंटिंग एंटायर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमें ये बहुत मैटर करता है कि जो डेटा है, करेक्ट, अभी इस केस में दिस एंटायर इज नथिंग बट व्हाट? डेटा। कहीं पर अगर डेटा में कुछ गड़बड़ आ गई तो लॉजिक सी बात है कि इसके बेसिस पर जो मैं रिकॉर्ड्स निकालूंगा वो गलत ही आएंगे। क्यों? क्योंकि कोर लेवल का डेटा ही गलत है। तो इसीलिए इसीलिए हमें स्टैट्स जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट जाता है लोगों को। ये रीज़न है। क्यों? अब देखिए, जिस डेटा की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो डेटा हुआ ना बेटा, ये हुआ प्राइमरी डेटा। क्यों? ये डेटा राइट मैंने आपको दिया, इस डेटा पर आपने कोई फॉर्मूला वगैरह अप्लाई की और आपने मीन निकाला। इसका मतलब प्राइमरी डेटा में अगर कुछ चेंज आया तो बाय डिफ़ॉल्ट मीन में भी चेंज आएगा ही आएगा। जैसे कि अभी अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, व्हाट इज़ द mean height of the student studying in 12th standard and who will appear in the exams for April 2021, करेक्ट। सो मैंने एक पर्सन को बुलाया, वो एक एक पर्सन की हाइट जो है वो मेजर कर रहा है। ही इज मेजरिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यूज हाइट, मतलब मैन्युअली, ठीक है, मैन्युअली ही इज मेजरिंग। सो जो पर्सन खुद आके मैन्युअली आपकी हाइट मेजर कर रहा है,
करेक्ट, एक पर्सन की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की और पांचवे की। पांच लोग की हाइट मेजर की यूजिंग टेप। तो इस डेटा को मैं कहूँगा इट इज़ नथिंग बट व्हाट, प्राइमरी डेटा। अभी इसमें से ही मैं अगर आप में से किसी एक को बोलूँ यार, व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द स्टूडेंट स्टडिंग इन द क्लास अपियरिंग फॉर एग्जामिनेशन इन फेब 21, वो क्या करेंगे? दे विल ऐड ऑल दीज वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। करेक्ट। सो ये मैटर करता है कि डेटा जो है वो हमें क्या दिया गया है, कितना एक्यूरेट है डेटा। अभी यही चीज़ देखो रिग्रेशन एनालिसिस में भी मैटर करती है। जितना मेरा डेटा का एक्यूरेसी अच्छा रहेगा, करेक्ट, उतना ही मेरे प्रेडिक्शंस जो हैं वो अच्छे बनेंगे। सो मोर द एक्यूरेट द डेटा, मोर बेटर द प्रेडिक्शन। और इस डेटा के बेसिस पे ही तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन निकालेंगे ना। Based on this data, you will find what? Information, right? So it really matters, no, when you go ahead for data or you talk about the information. So now let's continue. I can also say that one more example. Okay, let me take one more example for this. Say if I say person A 95 100 out of max in subject, correct, scored. नाउ सी दिस इज डेटा, ये आपका डेटा है, रॉ डेटा है। ठीक है, इस डेटा को जब तक मैं किसी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर दूं दैट इट कन्वेज सम मीनिंग टू मी, मैं इसको इंफॉर्मेशन नहीं बोल सकता। सो व्हेन आई एम गोइंग टू अप्लाई सर्टेन प्रोसेस, और प्रोसेस अप्लाई करने के बाद मैं बोलूँगा पर्सन ए स्कोर्ड 95 आउट ऑफ 100 in max subject. Now see, this is conveying some meaning to you. See, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डेटा का इम्पोर्टेंस समझिए आप। अब ये मेरा जो डेटा था ये रॉ डेटा हो गया ना, इट इज एंटायरली रॉ। इस पर जब मैंने कुछ प्रोसेसिंग किया तो मुझे जो डेटा मिला उसको मैं क्या कहूँगा? इंफॉर्मेशन। करेक्ट। सो दिस is nothing but I can say raw data, और इसको जब मैंने प्रोसेस किया and I processed, so what I got is information. So I think now it's fixed in your mind that more better the data, more better the information. And hence I told information can also be called as processed data. Information is also called processed data. So this is the basic meaning of a sentence when I say it is the science of averages. So there are various ways why you can understand this particular example of, I can say, time series or I can say data, various ways. और ये आप practically देखते भी हैं लाइफ में. Say for example I take IPL. In IPL also you see the predictions, right? करेक्ट। जैसे कि वो प्रेडिक्शंस कैसे आते हैं? डेटा के बेसिस पर ही आते हैं। जैसे कि आपने देखा रहेगा जब भी कोई नया बैट्समैन आता है तो दे टॉक अबाउट एवरेज स्ट्राइक रेट। अभी ये एवरेज स्ट्राइक रेट किसी भी बैट्समैन का उन्होंने कैसे निकाला होगा? करेक्ट, उन्होंने उस बैट्समैन से रिलेटेड बहुत सारा डेटा जो है पहले कलेक्ट किया होगा जब से वो खेल रहा है। मतलब अंडर 14, देन अंडर 19, जब उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चुकी होगी और जब वो पहले स्टार्टिंग से अच्छे मैचेस खेलना शुरू करेगा तब से उसका डेटा जो है कलेक्ट किया जाएगा। कलेक्ट करने के बाद उस डेटा को वो लोग क्लासीफाई करेंगे कि भाई ये जो पर्सन है, से बैट्समैन, वो किस
ऑर्डर में अच्छा बैटिंग कर सकता है, लाइक ही इज गुड एज एन ओपनर और ही कैन बी यू नो come in the middle order for batting, or he is an all rounder. So once that classification is done, फिर जितना उन्होंने रन्स बनाया है या विकेट लिया है उन सब का एनालिसिस होगा, एंड वंस दैट एनालिसिस इज डन आप क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन. सी आईपीएल में बेसिकली आजकल वही चल रहा है, जो नए नए प्लेयर्स आते हैं, how you get to know that whether those players are good or not. Correct. So we have data available with us. Now, whether that data is from Ranji Trophy, or from the various leagues or the tournaments will happen, which happens usually in an entire year, it is from them. So they do collect all these data, then they do the classification, and then they do the analysis, and finally they go ahead for interpretation. So it really matters, like the data what we collect, classify, analyze and interpret. Time series भी कुछ ऐसा ही है. So when I'm saying, or when I talk about time series, what it means, just a second. Yeah. So when I say time series, so we say that it is a sequence, it's a sequence of observations. Observations का मतलब data, ठीक है. It's a sequence of observations on a variable, on a variable at regular time intervals. Regular time intervals. या एक्चुअली कीवर्ड है रेगुलर इंटरवल्स, मैंने उसमें टाइम डाल दिया है. सब इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो मैं बताता हूँ. व्हेन आई से सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो भी एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स, तो आप बोलेंगे सर ऐसा कौन सा डेटा है, करेक्ट, जो हमें रेगुलर टाइम इंटरवल्स पर देखना पड़ता है, और सर ऐसे डेटा की हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, करेक्ट, वाई वी नीड सर्टन टाइप ऑफ डेटा. और सर उसमें फिर आप टाइम सीरीज बोल रहे हो, आप पहले एवरेज स्ट्राइक रेट बोल रहे थे. सब्र करो, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड. ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मुझे डेटा बहुत ज़्यादा वाइटल इंपॉर्टेंस रखता है, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम at regular intervals of time. See, one such thing I can say is the GDP of our country. Correct. The data required to understand this is at regular intervals. फिर अगर मैं किसी कंपनी की प्रोडक्शन की बात करूं, करेक्ट, तो मंथली कितना हुआ, क्वार्टरली कितना हुआ, ईयरली कितना हुआ, प्रोडक्शंस ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी. Correct. Yes, you can also say that. Correct. Data for COVID, or data after vaccination. Correct. And the number of people recovered, the percentage of people, weather. Yes, we can also say weather, seasonal changes. Correct. We have all those classifications, right? Then I can say monthly sales of a company. Correct, etc. So there are various examples where the data is now collected at specific time period. I'm being a specific time period. That is nothing but, I would say, time series. Abhi, let me take the example given by one of the student, that is weather. Correct. Now, when I say weather, now try to understand this. Since we stay in India, correct. So our climate observes certain, I can say, variations from Jan to December. Correct. So initially, I can say, like say December, Jan, Feb. Correct. We basically have cool atmosphere. That is, I can say, winter. Then say from April, May, it's hot. Then say from July, June or August, it's rainy.
and in between sometimes we also observe autumn. Correct. Now see, even this data is something different. इसको अगर मैं थोड़ा और बात करूं इस पर, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि लोगों का बिहेवियर भी, यानी कि लोगों का पहनावा, करेक्ट, इन एटमॉस्फेयर्स में चेंज होता है। जैसे कि जब ठंडी होती है तो ज़्यादातर लोग वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, गर्मी होती है तो लोग कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं। करेक्ट। रेनी सीजन में क्लोथ्स तो पहनते ही हैं, उसके ऊपर से रेनकोट भी पहनते हैं। ऑटम में नॉर्मल कोई भी क्लोथ्स पहन लेंगे फॉर एग्जांपल। हाँ, खाने पीने की अगर मैं बात करूं तो ठंडी में ज़्यादातर, करेक्ट, पीपल विल ईट समथिंग विच इज़ हॉट, से एग्स, लाइक नॉन वेजिटेरियंस एगिटेरियंस, चिकन, वेजिटेरियंस में हैव मशरूम्स एक्सेट्रा। गर्मी की सीज़न में लोग पानी ज़्यादा पीते हैं, या कोल्ड ड्रिंक की एडवर्टाइजमेंट्स एट द पीक होती हैं गर्मी की सीज़न में। ठंडी की सीज़न में ये आता है ना मनीष पॉल हमारा, वुलन क्लोथ्स के एडवर्टाइजमेंट में। रेनी सीज़न में रेनकोट की एडवर्टाइजमेंट्स आएंगी। करेक्ट। सो अगर आप देखें तो ये भी एक तरीके से क्या है, वेरिएशन ही है ना। जो डेटा कलेक्ट होगा होता अलग अलग टाइम पर है, it is what, these are also what kind of variations which we observe in the data. Correct. You won't find a person wearing sweater, correct, in the mid May over here, at least in Mumbai. Correct. You will not find such people. Correct. So this is again what, the ट्रेंड्स, करेक्ट, द डेटा। अभी आप सोचिए ना, फॉर एग्जांपल अभी जैसे ठंडी की एडवर्टाइजमेंट शुरू हुई है थोड़ी बहुत ठंडी। आज आप देख सकते होंगे टुडे द एटमॉस्फेयर इज रियली ऑसम। करेक्ट। सो इन ऑन टेलीविजन यू विल यूजुअली ऑब्जर्व द एड्स फॉर लक्स कूजी, correct, and so on. But if it's the month of May, you may see thumbs up, a lot of advertisement, Limca, correct, then Maza and all. Correct. A rainy season, mostly it is raincoats or the ceilings, Dr. Fix It, and so on, right? So these things change with time, and that is where we come into picture. Correct. In the previous chapter, we basically understood that we need to find a certain kind of what, a mathematical relationship, so that we can understand these things in a more better way. We have found out a mathematical relationship, correct, but here in this case we are going to talk about the method of least square. But before that, the data or the components what we have for time series, first we need to understand that. ठीक है, पहले हमें कंपोनेंट्स की बात करनी पड़ेगी। वो चार कंपोनेंट्स जब हम समझेंगे तो ही फिर मैं आगे बढ़ पाऊंगा। सो द कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। सबसे पहला कंपोनेंट जो है उसे कहा जाता है सिक्युलर ट्रेंड, ट्रेंड, और आई कैन से ट्रेंड एनालिसिस। करेक्ट। तो नाम से पता चलता है ट्रेंड, कोई भी ट्रेंड जब आप कोई सेट करते हैं, सो इट्स यूजुअली लॉन्ग टर्म, ऐसा डेटा जिसे आप कलेक्ट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म आप ऑब्जर्व करेंगे कि उस डेटा में क्या चेंजेस ऑब्जर्व हुए हैं। Correct. That is called as secular trend. Again, let me explain you. Like this will be the data which will be collected continuously for a long term. Correct. You will observe the changes occurring in the data once it is entirely been collected. And then changes में क्या ऑब्जर्व करेंगे कि वो डेटा कैसा है, मतलब ओवर अ पीरियड। अगर मैं सेल्स की बात करूं, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेल्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं कि वो डिक्रीज हो रहे हैं फॉर अस ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। करेक्ट। या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि जो एनालिसिस आपने की है वो सही डायरेक्शन में जा रही है कि गलत डायरेक्शन में जा रही है। सही डायरेक्शन में जा रही है तो मैं कहूँगा लाइक पॉजिटिव, गलत डायरेक्शन में जा रही है तो आई मे से नेगेटिव। सो सिक्युलर ट्रेंड मीन्स व्हाट, द डेटा विच इज बीन कलेक्टेड for a long period of time
and then you observe that, say, from year 1 to say year 10, what are the changes which are being encountered in the data. You may represent those changes and try to understand whether over a period of time the things are improving, are they moving upward, or they are not moving along, they are coming in the reverse direction, that is, are they moving downward. So ट्रेंड कैसा है वो भी मैटर करता है. अगर मैं आपको कहूँ इंक्रीज मतलब अपवर्ड, तो अब ये अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं तो आप बोलेंगे अपवर्ड ट्रेंड है. यही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें डिक्रीज हो रही है तो आप क्या बोलेंगे कि डाउनवर्ड ट्रेंड है. करेक्ट, एंड सो ऑन. सो द वेरी फर्स्ट इज व्हाट, सेक्युलर ट्रेंड. सेकंड, second is called as seasonal variation. Second is called as seasonal variation. अभी ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, ये यूजुअली इट इज द ऑब्जर्वेशंस व्हिच वी फाइंड इन 1 year's टाइम. जैसे कि मैंने आपको अभी अभी कुछ समय पहले बताया, सिंस आई एम डीलिंग विद इंडिया, तो इंडिया में आप 3 मेजर सीजन्स देखेंगे, समर, विंटर, रेनी. Correct. So the changes you observe in the data within 1 year, correct? Changes observed in data in 1 year will be called as your seasonal variations. Now third is quite an important one. थर्ड को हम कहते हैं साइक्लिकल, और ये ज़्यादातर हर ऑर्गेनाइजेशन फेस करता है. ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन faces this variation, that is cyclical variation, and it happens in almost all the organizations. मैं आपको बताता हूँ, देखिए, every organization, they starts from very small value, it gradually reaches the peak. Once it reaches the peak, if all the data not been monitored at regular intervals of time, then the organization may start to fall. And then once they know what is the problem they encountered, again the recovery starts and again it reaches at the peak. तो हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं. करेक्ट. तो जब ऑर्गेनाइजेशन किसी छोटे वैल्यू से चालू करती है और पीक पर पहुंचती है, तो उस पीक को कहा जाता है प्रॉस्पेरिटी. करेक्ट, दैट पीक इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रॉस्पेरिटी. मैं इधर लिख देता हूँ, peak is called as prosperity. Then if the data is not been consistent, not been audited properly, then it may move towards recession. Your company may move towards recession. RECESSION. So I will write over here, the company will move towards recession. Then once you know what problems you encountered with, you rectified those problems, you improved on those problems, your organization may start to recovery, and again it can reach the prosperity. Again, if there are certain errors, again it may go to recession, again the recovery may start, and so on. So certain kind of variations, correct, which is more or less, I would say, occurs at regular intervals of time or over a period of time, it repeats itself, is called as cyclical.
For example, I would say our market, correct, share market, almost every 5 to 10 years, surely it gives a dip, correct, and it gives a good dip. Market falls for one or the other reason. Now that is the trend. That is the trend analysis, right? So that is how, we can understand the things in a more better way. If you observe 2000, then before that 1998, then again 2008, correct, if I have founded out the market was going down, and again it's 2020 in the month of March we observed a good fall in the market. So there are certain things, correct, which no are in a nature that is cyclical, correct. On a similar manner, correct, the data which has been collected at these kind of sets will be called as your cyclical variation. Last is nothing but irregular variations. Now these are certain things which are in no one's hand. ये किसी के भी हाथ में नहीं होती, करेक्ट. लाइक से ड्यू टू फ्लड हो गया, सुनामी आ गई, करेक्ट, अर्थक्वेक आ गया, करेक्ट. तो ऐसे जो नेचुरल कैलामिटीज के जो होते हैं चांसेस होने के, और इनसे रिलेटेड जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं, दैट डेटा इज कॉल्ड एज योर इररेगुलर वेरिएशंस, correct. So these are few components that we need to remember. So kindly just go through this entirely. So let's try to understand the kind of trend we observe from the given data. So years and sales is given to us that I have plotted for you all. So let us try to move ahead. 2011 में 26.2. सो 26.2 देखो ये है 2011, करेक्ट, और उसमें है 26.2. तकरीबन यहाँ पर कहीं तो आएगा वैल्यू. सो मैं इसे सर्कल करता हूँ, ठीक है. 2012 में 28.9. तो 2012 में this is the value, say 28.9. 2013 33.7. 2013 में 33.7. तो 34 और 32 के बीच में 33.7 will be somewhere here. ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बनाई इसीलिए रहा हूँ, so that I can I am able to plot the things in a more better way. Next is 32.1 in 2014. 32 इधर है, ठीक है, 0.1, correct. So it will be someone here, 32.1. Then 39.8 in 2015. 2015 में 39.8. So 39.8 something over here. After that in 2016, 38.7. Something over here, 38.7. Then in 2017, 45.4. Something over here, that is 45.4. Then in 2018, it is 42.6. Somewhere around here.
करेक्ट, यू नीड टू प्लॉट ऑल दीज वैल्यूज, ठीक है। आगे चल के लाइन ऑफ बेस्ट फिट का जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो ऐसे ही आपको प्लॉट करना है। हाँ, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस मैंने बनाई है, दैट इज़ जस्ट फॉर माय यूज़, ताकि मैं पॉइंट्स बरोबर निकाल पाऊँ। आप लोग तो मतलब आराम से यूजिंग स्केल एंड ऑल यू कैन प्लॉट इट प्रॉपरली। It depends. Last year and from this year, your state board says that they won't give you a graph paper. They may not give you a graph paper. Last year, few colleges provided the students with the graph paper, and then those colleges were in trouble. You need to draw this on your ruler paper with your best approximations. Okay, so let us start. Let's see how this trend moves. So 2011 से 2012 ये ट्रेंड बढ़ा है, ठीक है। देन जस्ट इट इज इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2012, फिर और भी इंक्रीज हुआ 2013 में, फिर थोड़ा डिक्रीज हुआ है, फिर इंक्रीज हुआ है, फिर अगेन इट इज डिक्रीज्ड अ बिट, अगेन इट हैज इंक्रीज्ड, एंड देन अगेन इट हैज डिक्रीज्ड। तो आपको ये ओवरऑल देखना है, राइट। ओवरऑल आप मुझे बताइए, ओवर अ पीरियड ऑफ 10 टाइम the sales have increased or decreased over a period of time, in this entire period of time, correct? This is years and this is scale sales. So over a period of time, what you observe is the data or the sales has been increased over a period of time from 2011 to 2018. Yes or no? It is increased, right? Over a period of time, the sales have increased. So this is why we say it as an upward trend. We can call it as upward trend. Correct. So when I say upward trend, it means we are talking about secular trend over a period of time. When we gathered all the data and we tried to represent that data in a diagrammatical form, we observe that from 2011 till 2018, over this long period of time, the sales have been increased, correct? So it is an upward trend, or I can say increasing trend. Upward trend, or I can say it is an increasing trend, correct? Any doubts to anyone in this? So we'll stop here. This one is homework for you. See you all in the next lecture. Thank you.